नमस्कार दर्शक बंधु मु स्मृति लग्ना वर्तमान जेतेबेले ओडिशा आत्मनिर्भर हवा पई चेष्टा करुछि जेतेबेले विकसित ओडिशा को नै स्वप्न देखा जाउछि सेतेबेले जापानीज कंपनी ओडिशा रे इन्वेस्ट करुछंती ये बहुत खुशीर कथा व्यावसायिक संपर्क ओडिशा और जापान भितरे सुदृढ़ होउछि आ आम सह आज एमिति दुई जन व्यक्ति विशेष अछंती जहांक सह आमे साक्षात्कार नबा आलोचना करबा समानक सह आपनक परिचय करे देबा को चाहूछि जे ए संपर्क को आहुरी अधिक सहज कर दैछंती बोली कहि परिबा आम सह केई यामागुची मुख्य परामर्शदाता निटकल रो अछंती नमस्ते वेलकमिंग यू टू आवर स्टेट टू अर्गस स्टूडियो आम सहित अछंती देवेंद्र महंत जहाँ को बेस भल भाव आपन जानिछंती ओडिशार लोक किंतु 17-18 वर्ष हम जापान रे इन्वेस्ट करिछंती अनेक एम्प्लॉयमेंट बा नियुक्तिर सुजोग सृष्टि करिछंती इनाहो डिजिटल सॉल्यूशंस रो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी बा सीईओ सर नमस्कार स्वागत करूछि आपन को हम कार्यक्रम को प्रथमे आपन को आरंभ करबा पई चाहिबी जे ओडिसा रे जसीपुर रे आपन को जन्म एवं जसीपुर टोकियो पर्यंत जो यात्रा ताहा अनेकों को अनुप्राणित करिछि 17-18 वर्ष धरी जापान रे रहिबा एवं ओडिसा रे पिलां को दक्ष करबा स्किल करबा सहित सेमान को पई किछि गोटे नियुक्तिर सुजोग सृष्टि करबा ए कथाटा मुंड को केबेठो आस्थिला एटा ऑलमोस्ट 5 इयर्स अगरु आस्थिला माने मु जेते बेले अन्य बड़ कंपनी रे काम करथली एचसीएल एलएनटी भलिया एंड तांकर भी जापान में किसी बिजनेस नथिला प्राय तो मतलब स्क्रैच रू करे इम्पोर्ट था तो इनिशियल फॉर एग्जांपल 2005 रु 2013 तक एचसीएल रो मु एचसीएल टेक्नोलॉजी जो कंपनी तार स्क्रैच रू बिजनेस मु डेवलप करथली तापर एलएनटी रे मते चांस मिलला एलएनटी इन्फोटेक रे सेठी भी मु कली तापर मैं कली एगुडा चेन्नई नोएडा रे होची हम ओडिशा नो हियर इन द सीन तो तापर पर्सनली मोर और लेस मो झियो 12 पास करी यूएस पढ़े माने पढ़िया पे जाइथिला मो पाखरे भी टाइम थिला एंड फाइनेंशियल मु स्टेबल भी थिली तो मैं कहली व्हाई नॉट माने ओडिसा रे किछि करिया पे चाहे माने मदरलैंड को गिविंग बैक टू मदरलैंड सेठू अराउंड 5.5 इयर्स अगरो स्टार्ट करी इन हाउ डिजिटल स्टार्ट करलु बट इन इनिशियली आईटी सर्विस रे थिला बट लास्ट 2.5-3 इयर्स हबो बियॉन्ड आईटी सर्विस छाड़ी करी हमें निहन उत्कल जो अच्छी से भी किसी स्किल डेवलपमेंट फोकस निहन उत्कल रो जो नाटा सी भारी इंटरेस्टिंग निहन जापान रो उत्कल हेउची ओडिसा आगे आगे तो से आम फोकस अदरवाइज सब डाइवर्ट हो जाऊँ कहीं ओडिशा रे अन्य माने सिटी देखिए बहुत चैलेंजेस अच्छी इनिशियल डेज रे तो सेटा ओवरकम करने बहुत डिफिकल्ट हुए स्टार्टिंग फ्रॉम जापानी जिते आसबे से इकोसिस्टम देखती स्टार्टिंग विथ डायरेक्ट एयरपोर्ट अच्छी कि नहीं होटेल भाया एयरलाइन अच्छी कि नहीं रेस्टोरेंट अच्छी कि नहीं एंड मल्टीपल अदर थिंग्स से देखती तो सेटा गोटे जिनस है सेकेंड जिनस है कि डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो से चैलेंजेस थिला बट मु कहली कि नहीं लेट मी टेक ए चैलेंज एंड आई विल डू इट पर्सनली एटलीस्ट 500 पीपल पर्सनली आई कैन डू दैट आई हैव दैट कैपेसिटी एंड से यूनिक जिनस है कि 500 मु करे भुवनेश्वर पाखापाखि 100 मु जसपुर करने चाहे जो कि जापानी स्पीकिंग 500 लोक ये बसबे 100 लोक जन्म माटी को भी किछि ऋण अछि फेरेबी बहुत बढ़िया चिंताधारा Mr. Yamaguchi, previously you have been to Odisha more than 6 times. This time, government change. What is your observation? What is the difference? Thank you so much for your question. So actually, first time I came to here is almost 2 years back, and now almost as you mentioned 6 times. What's most now the big changes is that number one is that infrastructure. So I'm very amazing to the highway is a very stable, the very very good structure. Also the people and economy is more and more growing. So this is very for me is very attractive. In addition that so many young people is a very energy and very good the Odisha the good town for me. You are associated with Devendra ji more than 20 years. Yes. How's your relationship? Yes. So actually the almost 2002. Okay. I was SAP is package consultant and work with Devendra Mohanta is a pharmaceutical company. That is first the relationship. So then I met so many Indian associates and I knew the culture
of the so many Indian member. That is from start point for me. You love our culture, you love our state? That's why. So I love that Indian culture and food, and also the most important is religion, the mindset, because that in the Bhubaneswar is one of the Buddha is a start point. So mindset is very close. Also project in the project, very work collaboration, and teamwork, and respecting. That's kind of culture I love really. Also, this is very believed similar the Japanese culture. Wow. How do you define the calibrities of Odia people? Calibrity mean that Odisha people is very energetic and positive, and also how to say omotenashi mean that Japanese welcome kind of. So every time I'm happy to come here to the everybody welcomes at their home like Japanese, like that special. माने यामागुची कहैयाको चाहूछन्ते जे ओडिया लोक माने बहुत सिंपल, हृदय बहुत उदार, एनर्जेटिक थांती, परिश्रमी थांती, एणु ओडिशा बारंबार आसीबा पई इच्छा हुए. आपनको सह यामागुचीको संपर्क 20 वर्षरु ऊर्ध्व हेबो. जापानीज कल्चर सहित ओडिया कल्चर रो सिमिलारिटीज रही जो कथा से कहउथिले. आपण जापान मध्य जाइछन्ती, केते सिमिलारिटीज देखंती, ए संपर्क को केमती देखंती ओडिशा और जापान रो संपर्क को? माने जेतबे हम स्टार्टिंग रे जाइतु जापान रे बहुत डिफिकल्टी थिला, कारण छडी खाइबा पीवा हम केते दिन वेजिटेरियन, जेमनी मंडे में वेजिटेरियन, सैटरडे संडे कुआडे जीवु, ट्रेन फ्रेन छाड़ी गिरा हम किछि जानि नथु, माने निजो गाड़ी फाड़ी न थाए. तो सी ड्राइव करी आसंती, माने बहुत दूररू, बेसिकली ऑलमोस्ट 1 आवर से कार ड्राइव करी आसबे वीकेंड रे, हमको नै कि पिकअप करिवे, तापरे साइट सीइंग किमा बुलेया पई. देन केबे केबे हम इनिशियल फ्यू डेज हम बैचलर थिलु, तो किछि माने राइस करी करिवु, से खाइबे हम सहित, देन ही विल गो बैक. एंड तापर किछि प्रॉब्लम भेले, टेक्निकल प्रॉब्लम, बिकॉज से भाबेनी कि एटा मो स्कोप रे अछि कि नै, बेसिकली इमीडिएटली से हेल्प करिवे. बेसिकली भात तरकारी भल पांती यामागुची खाइबाकू? हां, तरकारी तो बहुत भल पांती. एंड से आम घरे ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड रे एबे भी आसंती, जोटा कि माने मु निजे नॉन वेज रांदे तांको पई, नॉन वेज रे चिकन किबा एग करी करे, तापर बिरयानी भी से लाइक करंती. ई सब तापर परोटा, ओडिशा स्टाइल परोटा भी से लाइक करंती. तो एगुड़ा से रेगुलाली आम खाई सब बिजनेस डिस्कसन हुए ओडिशा पे कौन करा जाई परिवो. एंड तापर से तांकर बहुत इंटरेस्ट थिला. सेते हमर ओडिया पिला भी के जण थिले, मो सहित काम करथिले, मो सहित मैनेजर थिले सेते बेले से प्रोजेक्ट रो. एंड से माने भी बहुत भलो यांको सहित क्लोजली काम कर, काफी पॉजिटिव तांकर इंप्रेशन सेते बेले थिले. मिस्टर यामागुची, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फाइंड ऑन द वे टू इन्वेस्टमेंट इन ओडिशा? Yes, so I have a several challenge, I think. Number one is infrastructure again to the now I'm the 6th time. Somehow it is developing. Yes, the airport, for example, to the I hope the once a week the direct flight to the Bhubaneswar to the Tokyo or Narita. Then more good the people to communicate. Number one. Second one is that many Japanese don't know the Odisha area. Of course, Delhi or Mumbai or city is well known. However, that Odisha is not yet popular in the Japan people. So challenge is that how to make Odisha popular in Japan? Also, this is we mean that like us to the more supporting to the government. For example, Odisha government people to visit Japan, or we invite Japanese business person to come to Odisha to introduce each other to the good point or strong point. Then I believe each other to understand, then improve to the getting the more opportunity. Great. ओडिशा लोकों को स्किल्ड करने को पड़िबो, दक्ष करने को पड़िबो. देवेंद्र बाबू, सत कहबाकू गले वर्तमान भी वैषयिक शिक्षा क्षेत्र रे बा ट्रेनिंग क्षेत्र रे ओडिशा एते आगरे नाही. तो वर्तमान जदि आम स्किल्ड डेवलपमेंट पई काम करबा बा ओडिशा लोकों को दक्ष करबा, कौन कौन चैलेंजेस आपण फेस करंती बा अनुभव करंती?
मुझे प्राइमरली इंजीनियरिंग कॉलेज किंबा जो बीटेक एमसीए अराउंड दैट रे फोकस करछि लॉट ऑफ माने डिप्लोमा आईटीआई रे मुझे जानि नै डिटेल इश्यूज कोन अछि बट बेस्ड ऑन दैट माने ए बीटेक हला एमसीए हला एमबीए हला गवर्नमेंट एज वेल प्राइवेट रे द कोर्स करिकुलम बेसिकली दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी सो मु स्ट्रेंज माने तांकु जते बडे माने जॉइन करूछंती एटलीस्ट वी हैव टू गिव 3 to 6 months ऑफ बेसिक ट्रेनिंग तांकु तापर आज मु जानि पाले कि तांकु कोर्स रे अछि बट दे आर नॉट एवर बेसिकली केमति पास कले मिनिमम 1 क्रेडिट ना केते क्रेडिट अछि से माने जणे वाइस चांसलर कहले तो सेटा गोटे जिंस हला तापर थर्ड ईयर रु एनी स्पेसिफिक माने लॉट ऑफ जनरल सब्जेक्ट गुडा में पढो बेसिकली जोटा कि रिलेवेंस हुए नहीं बेसिकली इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एते पढो बेसिकली जोटा कि रिलेवेंट हुए थर्ड ईयर रु जोटा कि आपण माने बिजनेस रे यूज करिवे धरा जो एसएपी किंबा आईटी रे आपण काम करथले थर्ड ईयर यू फोकस ऑन दैट एरिया बेसिकली धरा जो एसएपी रे जापे जो एसएपी सेल्स फॉर जापे सेल्स फॉर किंबा डिजिटल ले एआई रे जापे जो एआई ऊपर फोकस करले सो से बडा करले इजी टू गेट माने गुड रिसोर्सेस एंड एट द सेम टाइम दे शुड हैव सम बिजनेस नॉलेज माने एबे कोन होची बिजनेस नॉलेज रोहन बिजनेस नॉलेज टा सबसे इंपोर्टेंट हम अपन एनी काम कला आईटी सर्विसेस रे टेक्नोलॉजी टा हम के 3 मास रे ट्रेनिंग कर दे परियो एंड जापानीज लैंग्वेज टाइप बिजनेस नॉलेज टा थ्रू एक्सपीरियंस आसी थाए जेहेतु फ्रेशर पिला बा एकदम पास आउट करथिबे जदी आपण तांको गोटे सुजोग देबे हुए तो सेमाने करि न पारंती जेमति एसएपी कोर्स आपण कहउचंती ट्रेनिंग देई परिबो सेमानको बिजनेस एक्सपीरियंस पई किछि कोर्स रहउची हाँ मैं नॉर्मली कौन करूँ दुई प्रकार थे बेसिकली गोटे हूँ सप्लाई चेन रो जो कि स्टार्टिंग विद द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स प्रोडक्शन ऑपरेशंस आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इट इज बेसिक्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट हूँ कि फाइनेंस ऊपर बेसिकली आम दुईटा ऊपर फोकस करूँ एक फाइनेंस रे कौन आसे अकाउंट्स पेएबल अकाउंट रिसीवेबल जीएल बेसिकली ए दुईटा मेन आउ केते गुडा थाय कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड अदर थिंग्स आर आल्सो देयर तो ए गुडा हमर अराउंड 1.5 months रे मैंडेटरी ट्रेनिंग जे भी आसीबो दुईटा जिंस में मैंडेटरी गुडा होची जापानीज कल्चर द वेज ऑफ डूइंग बिजनेस language is mandatory except HR is also encouraged and third mane you need to be like whatever the course we are giving basically from the technology side je jo track rehte SAP track Salesforce track AI track to that is mandatory अच्छा इन्वेस्टमेंट को नेकी विभिन्न दिग प्रति जदि आमे कथा बा आपण जने कृषक परिवार रो मध्य आसीछंती कृषि क्षेत्र रे कोंतु नर्सिंग क्षेत्र रे कोंतु ओडिसा रे इन्वेस्टमेंट केते सहज हेछि मु तो माने इन्वेस्टमेंट डिटेल तो मु माने एक्सप्लोर करिनी बट प्राइमरी स्किल डेवलपमेंट जोटा मुझे देखी बेसिकली जापान रे देयर इज अ ह्यूज माने बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी जो माने भी चाष कर समस्त 80+ लोक यंग लोक के चाष करना एंड गाँव रे सब एंड से एनकरेज कर इंडिया जापान भितर ऑलरेडी आमर एग्रीमेंट भी अच्छी अन्य स्टेट रु जाउछन किछि किछि आमर इथ्रु प्राय कहीं जाऊना बेसिकली सेमती नर्सिंग रे भी अन्य स्टेट रु जाउछन आमर ऑफकोर्स अन्य किछि चैलेंज अच्छी जोटा कि मुझे कहि परिबेनी तो जापानीज लोक जोटा देखन सेटा रिटन रूल्स नहीं बट जापानीज लोक सर्टेन थिंग्स देखन जोटा कि वी आर ट्राइंग टू नेविगेट माने सेटा केमती कोन करा जाई परिबो तो नर्सिंग रे दैट इज अनदर फोकस सेटा को सीए आउ जने युवानागासन आसी नांती तो युवानागासन तांकर सेटा 5टा क्लिनिक सेठी ओसाका पाखरे ऑलरेडी सेटअप कर रखछन से भी दुई थर आसलानी ओडिसा बेसिकली एंड डिफरेंट जगह भी मीटिंग हेछि बस नर्सिंग पई तो सी एटलीस्ट 10-12टा एठो ओडिसा रो नेकरी ट्रायल करिया पई चोन नर्सिंग बेसिकली एटा सक्सेसफुल हले in 100 we want to do basically so that's skill development and not in investment area अन्य गोटे प्रोजेक्ट मु एबे जस्ट स्टार्टेड डिस्कसिंग विथ माने सीनियर लेवल माने ग्रीनफील्ड गोटे मेडिकल सिटी इसके जमती कर्नाटक रे हला ये रे तेलंगाना रे दे हैव स्टार्टेड सो सेथिरे मोर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं मु खाली जस्ट एनेबलिंग करूची तो जापानीज केते इन्वेस्टर अछंती आ यूएस रो कोन होय कि ऑल 60+ people माने यूएस रे हला देयर वेटिंग टाइम इज 9 months to 12 months इन सर्जरी करिया पे खर्च होची $1 million तो से माने इंश्योरेंस भी सतर कवर करि परिबनी तो से बडा टोटल से मेडिकल टूरिज्म रही हो सेतरी घर रही हो मेडिकल कॉलेज रही हो सो एवरीथिंग विल बी देयर इट इज बिग प्रोजेक्ट बेसिकली $10 million तो दैट इज मु रिक्वेस्ट करिछि यू कैन माने गवर्नमेंट को कि दे कैन डू एमओयू आई कैन इंट्रोड्यूस ऑल दोस थिंग्स इन द इनिशियल वेरी इनिशियल फेज Okay, Mr. Yamaguchi, what is the USP of Odisha? Odisha में ऐसे क्या है जो जापान में नहीं है? Unique selling point. Okay, so the Odisha, the unique point is that so again to the the religion, the point of view, that so many the mindset is collaboration and also with kindness
also again to the sorry that energy also younger people is a very for me is a strong point because in Japan now the population is going down and many company is lacking of the resource. Meanwhile that Odisha is so many young people, so that I want to the young people in the Odisha to get the opportunity to the Japan. Yeah. What do you expect from our government? So this is also that I want the government to consider to the invest to the Devendra Mohanta mentioned is that the unique education, like not like this paper study, but also more like the Japanese companies case study or experience to the more communication and kind of opportunity to the if Odisha government help to us to the support. So then I believe that Odisha young people making the unique point. Communication is the barrier. Communication means that sometimes business manner like a process, also the meeting process. Exactly. So kind of education is the most important. Also sometimes Japanese style of the start point, but Indian the meeting start point are slightly different. We need more each other to understand the approach. आमे उभयंकर अप्रोच बुझिबा दरकार आउ टिके आम देखा साक्षात को सहज करबा दरकार कम्युनिकेशन रो बैरियर को केमती ओवरकम करबा देवेंद्र बाबू सब बेले मु कहे कि टू इन अ बॉक्स माने हमें जो करूना में टू इन अ बॉक्स हमें जापानीज कस्टमर पाकू जाओ तो वी गो टुगेदर वी गो हियर टू गवर्नमेंट वी गो इन अ बॉक्स बेसिकली सो बहुत हुए ट्रस्ट हेबा दरकार बेसिकली अदरवाइज हमने ट्रस्ट करियन मु जदी एक्टिया जाई को जापानीज कस्टमर को दे विल नॉट ट्रस्ट जे भी टॉप मोस्ट लेवल वाले भी यू शुड हैव सम जापानीज विथ यू सो दैट गिव्स एडिशनल ट्रस्ट ओके एंड जापान थरे ट्रस्ट हेबा पे टाइम लागे बट टाइम माने हे गेला माने दे विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग एंड देन इकोसिस्टम गुडे दरकार बेसिकली जेमति कि गुरगांव मानेसर हला पुणे हला एंड चेन्नई रे हला जापानीज कंपनी एते कहीं आसी पारले बेसिकली ओनली होची कि इकोसिस्टम सामना करले नॉट ओनली लैंग्वेज प्लस सेडी जापानीज स्पेसिफिक होटल्स माने एरिया बनेले तापरे रेस्टोरेंट्स मल्टीपल थिंग्स बेसिकली टोटल इकोसिस्टम टा रहला बेसिकली so we can start with माने जो जापानीज लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल एंड स्लोली अदर थिंग्स वी कैन इंप्रूव बेसिकली सो आमे सी फास्ट रे जापानीज लैंग्वेज रे फोकस करिछु तापरे अन्य दुई तीनटा में डाउन द लाइन विल ट्राई टू फोकस ओके व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मेकिंग स्किल्ड मैन पावर what's formalize so now we are focusing the Japanese development skill then also the 30 people or 40 people the start point to the educated and first we make a core like a member to the growing to the these people after that the step by step to the expanding to the knowledge of the process that's my idea yes देवेंद्र बाबू सरकार को ठारू केमती प्रोत्साहन आशा करूछंती आपण कोन रहिबा दरकार भूमिका ए संपर्क को आहुरी अधिक सहज करबा पई आ सुदृढ़ करबा पई मते माने मु एबे डायरेक्टली पूरा डायरेक्ट किछि रिक्वेस्ट देइनी मोर पे कोर्टसी मीटिंग गुडा हेछि बेसिकली एबे माने जनवरी फेब्रुआरी रु मु डायरेक्ट एक्शन एबे धीरे धीरे स्टार्ट रु धीरे धीरे मु स्टार्ट करिछि बेसिकली रिक्वेस्ट करिछि बेसिकली इट वाज मोर पे कोर्टसी इंट्रोडक्शन मीटिंग एंती ब्लाइंड यूनिवर्सिटी पई गोटे तापरे आ केते गुडा जिंस थला ग्रीन फील्ड पई तापरे मो स्पेस पई हला माने जो जापानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो माइट बी माने फास्ट वाला माने सामने विजिट करबा दरकार बेसिकली सेटा मु ऑलरेडी रिक्वेस्ट करूछि बेसिकली अन्य स्टेट गुडा गवर्नमेंट फॉर्म हो विदिन 6 मंथ्स मस्त विजिट करी आसले माने तो जो कथा से कहथिले जे जापान रे एबे भी ओडिसा लोकप्रिय होई नाही बा पॉपुलर होई नाही ओडिसा को जदी हम लोकप्रिय करबा हमर निजर खाद्य अछि जो कथा कहथिले से जापानीज कि तांकर खाद्य अलगा किंतु आपण भात सांगरे तरकारी हैला कि हमर जो खाद्य हैला तांको परसी देथिले से खूब खुशी रे बा आग्रह रो सहित खाई परथिले एमिति गुडाय जिंस अछि आपण कोंतु जापान रे माइंस नाही ओडिसा रे अछि तो गुड़ाए जिनस अच्छी जोटा से माने भल पाइबे से माने बुलिबा को आसीबा को पसंद करिवे से माने खाइबा को आपण टूरिज्म सेक्टर रे कोंतु मेडिकल क्षेत्र रे आपण कहिले ये सब दिगरे हमको आहुरी टिके
आगो को जीवाको पड़िबो जदि कम्युनिकेशन टाकू आमे गोटे बैरियर न रखिकी Correct. से भितरे टिके सहज रास्ता बाहर करबा तो आम संपर्क आहुरी सुदृढ़ होई परिबो निश्चय आई थिंक डेफिनेटली कम्युनिकेशन गोटे जिनस अच्छी तापरे कंटिन्यूअस फॉलो अप दरकार जापानीज माने ओवर द टाइम्स अपन बहुत अन्य कंट्री 6 मंथ्स रही गला 1 ईयर रही गला कारण मु टोटल माने अन्य सब एटलीस्ट 20 कंट्री विजिट करी बिजनेस भी करे 20 कंट्री जापान टाइम नहीं बट माने छाड़िया पे भी टाइम नहीं है बेसिकली तो वंस यू स्टार्ट दे रिमेन एवर बेसिकली गोटे कस्टमर मु कहि बेसिकली मो सहित कस्टमर से अछंती 12 वर्ष मु जो कंपनी जाउछे दे आर वर्किंग विथ मी जापान टेक्स टाइम टू कनेक्ट एंड टेक्स टाइम टू लिव राइट Yes, correct. ओके Correct. सो सेटा पेशेंस हेबा दरकार तो बेले बेले इम्पेशेंट हेकि एबे जेकिर कले 2-3 वर्ष पर ता फड़ाटा आसीबो ना रिजल्ट आसीबो इमीडिएटली आसीबोनी एंड समको दरकार बेसिकली ऑल मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल एरिया रे वी आर ट्राइंग टू माने जते हेई परबो मु इंडिया जापान बिजनेस काउंसिल रो भी डायरेक्टर अछि तो इंडिया जापान विषय जते भी बड़ बड़ मीटिंग होए एंड 10 वर्ष जते भी बड़ बड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गुडा हेछि कंट्री लेवल तो मु इन्वॉल्व थली आगुरु बेसिकली बे इन्वॉल्व अछि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर बहुत भल लागिला अपन दिजन को सहित Thank you so कथा much. हेके Thank you very much. स्पेशल थैंक्स टू यू धन्यवाद. दर्शक बंधु जमती देखुले आपण जापान और भारतर संपर्क को सुदृढ़ करबा पई चेष्टा तो चली किंतु ए भितरे ओडिशार अनेक कथा जापानीज मानकु बेस भल लागिछि ओडिशा को जापान रे आउ टिके लोकप्रिय करबा एवं इन्वेस्टमेंट बा व्यवसाय क्षेत्र शिल्प क्षेत्र को आहुरी सहज करबा पई ये गोटे अभिनव चेष्टा बोली आमे कहि परिबा बहुत बहुत धन्यवाद आम कार्यक्रम रे जोग दैथिबा पई विदाय दियंतो नमस्कार. जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं.